the importance of these all things that are being talked to you. ठीक है, मैंने भले टेक्निकल चीजें बताकर स्टार्ट किया है, लेकिन ये टेक्निकल चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. आपका माइंड एक सेकेंड में क्या क्या चीजें सोच लेता है, वो 3 क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ मिल जाता है. वो टेक्निकल चीजें मैंने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए लिखवाई हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि किस तरह इनिशिएट किया जाए, किस तरह स्टार्ट किया जाए लिखना, क्या टैक्टिक्स यूज करने होते हैं हमें स्पीच लिखने के लिए. एटलीस्ट आपके पास 12 क्वेश्चन रहेंगे, आप उन क्वेश्चंस के आंसर करते करते बहुत सारा डाटा गैदर कर सकते हैं. उसको फॉर्मुलेट करना या नहीं करना आप पहले करके देखो, उसके बाद फिर मेरे पास आओ कि हाँ मैम प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह नहीं हो पा रहा है, इतना सारा डाटा हमने ले लिया है. वो चीज आप करोगे ही नहीं तो कैसे फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज योर पोटेंशियल. गूगल से देख के लिख लेना बहुत आसान होता है, आपको हर चीज का आंसर वहां पर मिल जाएगा, लेकिन वहां आपको ये आंसर नहीं मिलेगा आपका ओपिनियन क्या है. यू कैन नॉट फॉर्म योर ओपिनियन और सर्च योर ओपिनियन फ्रॉम समवेयर एल्स. 4 टॉपिक्स दिए थे, उसमें से टॉपिक चूज किया कि नहीं किया, पहले ये बताइए. हर स्टूडेंट ने कर लिया. कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि चारों में से कौन सा लिख पाएंगे वो. Is there any student who is facing any problem regarding this? ये जो 4 टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं उसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक उसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखें. अभी के अभी हैंड रेस करो अगर कोई स्टूडेंट है. देयर इज नथिंग शेमफुल टू रिगार्ड दिस. ठीक है, ये आपका अपना इंडिविजुअलिटी होता है, इसको रीगेन करिए, अपने खुद के प्रॉब्लम समझिए, तभी तो आप सोल्यूशन निकाल पाओगे ना उसका. आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, किसी और का वेट मत करिए कि हाँ वो भी उसको भी दिक्कत आ रही होगी तो वो बोल देगा, मैं नहीं बोलूंगा. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम स्टैंड अप हियर एंड स्पीक. चारों टॉपिक्स में से एक टॉपिक आप चूज कर चुके हैं. यस, इफ यू हैव चूजन द टॉपिक, तो जिन लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया था, इससे पहले वाला क्या टॉपिक दिया था मैंने, इससे पहले कौन सा टॉपिक? नहीं, उससे पहले एक टॉपिक दिया था कोविड वाला. कोविड वाला टॉपिक जो था वो लिखा भी नहीं होगा क्योंकि मैंने तो बोला नहीं आप लोग को. नहीं, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, बोले भी जिसने नहीं लिखा है, जिसने नहीं बोला है उसको बोले. यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने प्रेजेंट नहीं किया था या लिख के मुझे सबमिट नहीं किया है, आप लोगों ने लिखा है क्योंकि रिटन फॉर्म में भी जो स्पीच आपने लिखी है मेरे पास मुश्किल से 10 लोगों की स्पीच होगी. बाकी लोग लिख के सबमिट कर रहे हैं ना लिख के मुझे दिखा रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा काम. सिर्फ ऑडियंस में ताली बजाने के लिए बैठे हुए तुम लोग. फाइंड आउट योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. क्या चीजें आप ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, किन चीजों पे किन चीजों पे नहीं हो पा रही है. यही आपको हेल्प करेगा अपने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को आंसर करने में. अपना पोटेंशियल फाइंड आउट करिए, क्या चीज है जो आपको आसान लगती है, क्या चीज है जो आपके लिए हार्ड होती है. आपको लगता होगा कि ये चीज आपके लिए आसान है, हो सकता है आपके बगल में जो बैठा उसके लिए डिफिकल्ट है. उसके लिए वर्क करना पड़ेगा ना फाइंड करने के लिए भी. बिना वर्क किए तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या चीज आसान है क्या चीज मुश्किल है. Alright, those students who have written the speech, they can come up here and present. नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ. Very warm good afternoon to all of you and respected men. I am Anshu Kumari and today I am over here to represent a short speech on gender gap in education. Firstly, I would like to tell you some quotes. I don't know why people have divided the whole world. I don't know why people have divided the whole world into 2 groups, West and East. Education is Middle East, Eastern, Northwestern. Education is education. It's the right for every human being. Gender equitable education system empower girls and boys and promote the development of life skills like
communication, negotiation, and critical thinking that young people need to succeed. They close skills gaps that memorize pay gaps and build prosperity for entire countries. Gender equitable education systems and contribute the reductions in school-related gender-based violence and harmful practices, including child marriage and female genital mutilation. Gender disparity is evident in India's childhood literacy rates. 82% of boys and literate only 65% of girls and can read and write. According to the 2011 Census of India, statistics show that about 10% more than enrolled in Indian high school by 2019 compared to 2011. UNICEF works with communities, governments, and partners to remove barriers to girls' education even in the most challenging settings. Because investing in girls' secondary education is one of the most transformational development strategies, the priorities efforts that enable all girls to complete secondary education and develop the knowledge and skills they need for life and work. Only 49% of countries have achieved gender parity in primary education. At the secondary level, the gap widens. 42% lower secondary education and 24% in upper secondary education. The reason are many barriers to girls' education like poverty, child marriage, and gender-based violence. Vary among countries and communities, poor families often favor of boys when investing in education. There are 5 ways to fight gender gap. Give girls access to education. Give women platforms to be empowered and achieve economic success. End violence and sexual assault against women. Assure girls, women have access to menstrual facilities. And last is end child marriage. Thank you. Yeah, that's why they are sitting behind, na? Only for clapping for others. इसलिए वो लोग वहाँ पे बैठता है. Any feedback? आप दोगे या मैं दूँ? First of all, no eye contact. Make eye contact with at least 5 times now already told you. Second of all, too much data to do. Too many facts here available. Lessen the facts, more explanation, and less use. आपकी आवाज अच्छी है, और multiple और important things with 5 page by that was good. But आपका डाटा बहुत ज़्यादा है. ठीक है? लेकिन statistical facts आपने include किए, एक या दो काफी, बहुत सारे include किए. ठीक है? उसको explain करते हुए अपने point of view में अपने words में बताइए. Yes. Good afternoon, everyone. And my respected teacher, I am Adarsh Kumar from Bridge1. And I am going to deliver a short speech on the topic: is being human is enough to possess humanity? When everyone talks about the religion, that no matter which religion we belong to, we are the human first. So far, the most important reason is humanity, because just being a good human defines you everywhere. In humanity, there is no religion. We have to be helpful and to really the people at all times. Humanity means forgetting ourselves, selfishness when others need help, and loving and caring towards all the living beings and even plants and animals. We don't. Humanity means forgetting our selfishness and when others need our help, and be loving and caring towards all the living beings, even plant and animals. We don't need to be rich to serve the humanity.
And I would like to add some words of Mahatma Gandhi. He said that you must not lose faith in humanity. It is an ocean, and if a few drops of ocean becomes dirty, the ocean does not become dirty. Mother Teresa is such a great example of humanity who works for poor and helplessness. And lastly, I want to add a point said by Munima Mazari. You also know her as the Iron Lady of Pakistan. He said, "You work hard to make money, do it for yourself. That's not life. You go out to seek for the people who need your help and make their life better. And, and you become a sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who emits the beautiful positive vibe. And when you realize that you have changed someone's life only because of you, that's the day when you leave, and that's the humanity. Thank you. Yes. We belong from fire and everything. One person. I thought you were writing about wrong. They कर देते हैं जीते जरा. If you're writing about particular person, then he's No, ma'am. you're writing about the particular No, profession, I'm- ना? Yeah. हाँ, तो वो जो आपने इंस्टीट्यूट का नाम दिया ना, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो इसके लिए पहली बात तो प्लूरल में रहेगा क्योंकि उसमें सारे, इट इज अ ग्रुप ऑफ एजेंट्स, ठीक है? यस, एनी फीडबैक फ्रॉम दिस साइड? साउंड तो लो इसीलिए था बिकॉज ही डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस. इसका वॉइस से पता चल रहा है कि ऊंचा बोल सकता है, बोल नहीं पा रहा है. नहीं, इसका आवाज इतना तेज है कि वो एटलीस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू तक आना चाहिए था. इतना क्लियर नहीं, इससे ज्यादा जोर से बोल सकता है. आई कैन नो द कैपेबिलिटी, ठीक है? वो कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं बोला. और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है? जिस चीज में कंफर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है वो तो तुम्हें पता है ना, बस उन्हें नहीं पता है. तो व्हाटएवर इज योर कंफर्ट जोन, प्लीज दैट. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ काट देने से समझ में आता है कि ये लाइन नहीं बोलती है तो काट दीजिए. ऑल्सो आपका हैंड जेस्चर जो है वो डिस्टर्बिंग, हाँ, डिस्टर्बिंग बिकॉज इट रेस्ट्स हियर एंड इट गोस टू दिस, ठीक है? और ये पोडियम पे नहीं होता है. अगर ये जेस्चर आपका नेचुरल है तो पोडियम से हट के बात करिए, ठीक है? अगर आप पोडियम पे हैं तो आपका हैंड लोअर होना चाहिए, ठीक है? इट शुड ओनली रेज व्हेन यू वांट टू मेक अ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू द ऑडियंस, ठीक है? कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ठीक है? My name is Shreya Jashwan. Today's topic is what is the most honorable profession in my opinion. In my opinion, the most honorable profession is an IAS officer. We all know that what is IAS and what is the power of IAS. Many students opt to enter into the field of civil service after their graduation that offers them a challenging career of ambitious opportunities. And lifestyle polls that more than 70% participants being an IAS officer is their dream job. And we are not surprised. It gives you the chance of gaining power and authority, all the while being compassionate serve the country. This is why increasingly many students are opting for the dream career of being an IAS. Students aspire to option for career where they will be respected and where they can have ultimate authority of their own life. The position of IAS officer is respected and praised by the entire nation, and respect remains unmatched. This is one of the topmost reasons why IAS is an honorable profession. Now I would like to conclude by
अगर आपको इतना ही इंकरेज करने का मन है क्लास से बाहर चले जाओ, वहां से इंकरेज करिएगा, ठीक है। अपने से तो एक स्पीच आप लोगों ने दी नहीं है, इंट्रोडक्शन तक के लिए जबरदस्ती बुलाना पड़ा है मेरे को यहाँ पर। इंकरेज कर रहे हो दूसरे को वो अच्छी बात है, लेकिन क्लास के दायरे में रह के करो, थिएटर नहीं है ये, क्लासरूम है। Yes, any feedback for her? What about the body language? But I can see it is of improvement. Like the last time she was better, she tried to control her voice. Now वो ज़्यादा नहीं चलती। लेकिन आप जो बोल रहे हो आपकी आवाज पहले भी स्ट्रेट है, ठीक है, और प्रोपोर्शन बिल्कुल नहीं इन द सेंस कि जहाँ पर होना चाहिए, आपने जो 2-3 पॉइंट्स बोले वहाँ पर आपकी वॉइस में वेरिएशन आना चाहिए, वो ठीक है। आपकी वॉइस कॉन्स्टेंटली हाई पिच को ट्रैवल करने की कोशिश करें। You do not need to be high pitched or you do not need to be heard by each and every person, especially when you don't have any helping aid. अगर आपके पास माइक होता तो वो अलग बात है, अभी आपके पास माइक नहीं है, try to be as neutral your take your voice as neutral as possible, ठीक है। Also जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर वॉइस वेरिएशन आना चाहिए, अब पता चलेगा कि वो पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस, नेक्स्ट। Good afternoon, everyone. My name is Krishna Kumar. Today I am going to present a speech on should being a mother be a paid profession. Did you know the word mother is derived from Sanskrit word which means matri, which means a woman who gives birth. A mother is most important character in everyone's life. She is our first well-wisher, first teacher, and also our first friend. So I don't think being a mother be a paid profession. In Sanskrit, there is one saluk that na matu para devata. It means there is no god better than mother. So, mother is the actual goddess. So mother is the actual goddess that we can see with our eyes. So I will conclude this speech with one Hindi quote that please listen carefully. पूछता है जब कोई मुझसे कि दुनिया में मोहब्बत बची है कहाँ, पूछता है जब कोई मुझसे कि दुनिया में मोहब्बत बची है कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आ जाती है मेरी माँ। थैंक यू। Yes, any feedback? The only flaw in this was as what you told you, try to keep as neutral as possible. The more you make movement, okay. Especially this thing should not happen in my process. This is a nervous state, one of the nervous state. So this when either when you have been writing continuously or either when you want to show something that you're nervous or you're bored. So यहाँ पर आके बहुत सारे emotions try to control that. First of all, that's a very good thing that we have achieved about the speech. मतलब इतना fast recovery मैंने कहीं भी नहीं देखा है. Like from the last stage to this one, noticeable speed lower हुआ. It is very much noticeable that you have completed that journey from getting that perfect speed which you won't find. That is very good. अभी भी improvement है, लेकिन it is very good that जो आपको
Next. Afternoon, everyone. My name is Prasad Kumar. Today my topic is being human is enough to possess humanity. It is not enough for human to being a human but human. But humans are those who have humanity. Those human who does not possess humanity, they are like an animal. Only human have thinking and understanding power who are present on the earth. In today's era, very few women who are thinking or of humanity. Let me tell an example, a real example. 2 days ago, I was coming through train. So there was so crowd in the train. Then I saw an old man was sitting near the door. After some time, the train has stopped to a station. Then a man come and kicked him and told that get up and abuse him too much. That old man was he's a grandfather. Is this a humanity? For God have created us so that so this day God will also think that is this human created by me? The person who can't respect that old man, will he respect his parents ever? A human never be complete, but they can show their humanity to be a human. Respect, always respect everyone. Thank you. Any feedback from your side? Okay, first of all, the positive points, content was very good. Okay, your content was very good. Second of all, you have included story and example that was a nice touch to your speech. Yes, the voice variation was notably lesser. ठीक है, आपका voice variation बिल्कुल भी नहीं था. यहाँ पर आपने stories में questions जो रहे, questions emotion के साथ question दो चार आपने stories वो emotion के साथ पूछे. Second of all, look at the audience. Once or twice or कम से कम 5 बार अपनी audience को देखना. देखकर read नहीं. Also, your body is too much rigid. ठीक है, ऊपर ज़्यादा rigid, पता चल रहा है क्या हो रहा है. Good afternoon to one and all. I am Shashank Raj. And the topic is what is the honorable profession according to my opinion. Undercover agent, I mean raw agent, is the most honorable profession in my opinion. Let's first talk about raw. What is raw? Raw is undercover agent. They belong from raw is undercover agency. They belong from spy agency. Even no one know about them, include family also. People know them about their different professions, but no one knows their real profession. They hide their identity and doesn't get any fame. Undercover always do secret missions and they are the best international spy for our country. They work secretly to help for knowing mindset and politics about our country. They are always dedicated to our country and work at the edge of the sword. There is a lot of hindrance in their path. If they will do a single mistake, they may lose their lives too. They serve their life for our country. They protect us from terrorist attacks and also from being massacred by the religious threat.
handling from our country. Now I want to conclude. भारत माँ के वीर सपूत, भारत माँ के वीर सपूत दिल से ही कुर्बान हुए। दुनिया की क्या फिक्र हमें, हम ऐसे ही नहीं महान हुए। Feedback from your side? ना excitement सर खोल लो, आँख खोल लो। पीछे फसल लगा हुआ था। तुम्हें देख के बैठना चाहिए ना, वो तो बैठा हुआ ही है पहले से। All right, yes. Any feedback? Content was good. ठीक है बोल रही है, क्यों ढूंढती मैं वॉइस वेरिएशन था थोड़ा। Yes, first of all, content was good. ठीक है, लेकिन आपका जो वॉइस वेरिएशन श्लोक के टाइम में हुआ है या तो पोएम के साथ में हुआ है, उससे ज्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, वॉइस वेरिएशन थोड़ा सा और बेहतर होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। एंड वो सेम वेरिएशन जो आपके पोएम में आया है, वो वेरिएशन आपके थ्रू आउट द स्पीच में रहता और भी बेहतर। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर आपके रिलैक्स्ड मोड में आ गए, like your body is not too much rigid when you are coming up here. ठीक है, it can be shown that you are at least comfortable, if you are not confident or not, but you are at least comfortable coming up. ठीक है, थोड़ा सा वर्क बस वॉइस मॉड्यूलेशन में करना। हाँ, यस, नेक्स्ट। See, this thing happened when you keep waiting for your opportunity. You don't have to wait, you have to grab your opportunity. Good afternoon, respected ma'am and all my friends. Thank you for giving me the opportunity to say something about most honorable professors. In your opinion, most of people think that most honorable professors are army officer, police officer, bank officer, doctor, etc. But in my opinion, teaching profession is most honorable because I have felt that teacher is very respected in our society from our ancient times nowadays. I still remember that when I was 8 years old, then my grandfather told me a story that one day a very big honor had won in a big party where many of person had came whose professions were different. In party, everyone wanted to meet him. So he invited to many persons, in which one of the person was engineer, one of person was doctor, one of person was bank officer, etc. But they didn't so happy to meet them. But when he meted to a teacher, then he feels very happy. Then a person who standing nearby him asked the question to him, Dad, why did you so happy to meet a teacher than other professors? Then he said that when you will become something, then that person meet you happily. Otherwise, they won't meet you happily. But in the process of being something, teacher help anyone very much, and it is applicable for me. So I respect any teacher very much. If anyone thinks that teaching profession doesn't support more in our GDP, then they are wrong. Because GDP rate increases due to teachers, as that all companies honor or employ things to grow their company's income. Which causes country's GDP rate increases due to their knowledge, but they obtain from their teachers. Someone wants to be software engineer, doctor, banker, but everyone be due to a teacher. Everyone know very well that in every other profession we get only salary, but in profession of teacher they get two things. First is salary and other thing is respect. If anyone do other work, then they get respect from their junior and only that people who belongs to this sector. But if anyone profession is to teacher, then they get respect from junior and this sector people as well as from their student and their student families. If anyone assembly or party, they say that my profession is teaching, then they get more respect to other profession. At last, I would like to say that teaching is the profession that teaches all of the other professions. Thank you.
Yes. Any feedback from your side? First of all, पहले से बेटर हुआ है, लेकिन still there are few of the grammatical mistakes. कंटेंट का मीनिंग बहुत अच्छा था, आपने जो भी मीनिंग क्रिएट करने का सोचा वो कंटेंट अच्छा था. थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो नोटिसेबल आई थिंक मेरे जगह और किसी को नहीं हुआ होगा, लेकिन देयर वर फ्यू ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. तो वो नोटिसेबल था जस्ट बिकॉज ऑफ यू वर सेइंग इट इनटू सिंगल टोन. अगर वो वॉइस वेरिएशन होता तो वो नोटिसेबल ही नहीं होता. ठीक है, वॉइस टोन मॉड्यूलेशन आपको करना होगा थोड़ा बहुत चाहिए. एंड आफ्टर दैट वर्क ऑन लिटिल बिट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, तुम्हारा दिन ठीक नहीं है, पैर मार रहा है मैम, जान से गिराने. थोड़ा बहुत आपको ना कॉन्फिडेंस पे भी वर्क करना है. आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते यहाँ पर. ठीक है, आपका वॉइस तो कमजोर है ही पहले से, और उसके बाद और ज्यादा दबा हुआ आता है व्हेन यू स्पीक अप. ठीक है, कॉन्फिडेंस पे थोड़ा और वर्क करिए. डरना नहीं है, थोड़ा गलती होगा, वो सिर्फ आपको पता है क्या गलती हो रहा है, उन लोगों को नहीं पता. कम अप हियर, स्पीक कॉन्फिडेंटली. ठीक है, यस. नेक्स्ट. मेरे साथ सब शायद Hello everyone, I am Aryabhata and I am here to present my thoughts on the topic is being human enough to possess humanity. But first we have to understand the term humanity. Humanity refers to caring for others, helping for others whenever and wherever possible. That is, helping others at the time when they need that help most. It is important as it helps us forget our selfishness interest at the time when we need to help others. A perfect example of humanity can be demonstrated by a story of a king. A king with a kind heart once saw a pigeon and an eagle fighting. It possessed the ability to communicate with birds and animals. The pigeon asked the king to save him from the eagle. When the king told the eagle that he is ready to pay any price for saving the life of pigeon, the eagle asked king to give him equal amount of flesh that a pigeon has. Then the king surrendered himself in front of the eagle and said eat himself instead of the pigeon and live the life of a pigeon to as he wants to live. After listening King's this statement, both pigeon and eagle turned into a beautiful fairy and blessed the king with the support of his humanity. According to me, blessing is most important power that we can get here. Serving the poor and disabled, needy ones is one of the greatest humanity. Without thinking of caste, creeds, colors, religions, it is necessary to understand the fact that we are extremely lucky to have a chance to help someone who is needy one. Serving the needy ones means that you yourself think that you have to more than enough to resources to your proposal. It is important to understand one important factor: an individual's life is successful not by number of degrees he or she attained, but the degrees of humanitarian activities that individual is into on day-to-day basis. And finally, I want to say with a quote: "Care for others without selfishness, care to others without selfishness. In the happiness of others, find your happiness." And there is one another quote that is, किस मानवता की बात करते हैं हम, किस मानवता की बात करते हैं हम, भाषण देकर के भी वही काम करते हैं. Thank you. Have a good day. What is the feedback from your side? voice modulation. Voice modulation, I think that was because of his accent. That's why you are not able to work your
false motivation, क्योंकि आपका एक टोन है ऑलरेडी फिक्स हुआ हुआ, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। आपका जो टोन ऑलरेडी बैठ गया है ना, उसकी वजह से आपका वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है। वो टोन को पहले न्यूट्रल करो, ठीक है, उसके बाद आपका वॉइस मॉड्यूलेशन। ऑल्सो व्हेन यू कम अप हियर, स्टॉप जिटरिंग, इधर उधर नहीं हिला करो, बी स्टेबल हिलो, ठीक है, हल्ला नहीं है इधर, स्टेबल जितना हो सके उतना स्टेबल रखो। जितना आप मूवमेंट करेंगे उतना आपकी ऑडियंस का डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, ना फिर वो कमेंट करेंगे। इट्स बेटर टू बी स्टेबल एज स्टेबल यू कैन बी। एनी अदर फीडबैक दैट यू वांट टू गिव? आई कांटेक्ट था, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं था, बट स्टिल स्टॉप लिटरिंग अबाउट दैट, ठीक है, हाँ बस इंक्लूड नहीं करिए, दैट इज ऑल राइट। Because the thing is, I have already told you, the more you are visible, the more it is becoming obvious to the people how your movement is. तो लंबे people के लिए उतना problem तो होगा ही कि आप लोग का जितना movement है वो ज़्यादा visible रहता है। Any other students? Good afternoon, respected faculties and my dear friends. First of all, I would like to thank all of you for the opportunity given to me to be here today. My name is Ramu Kumar. I am present here for presenting my view on should being a mother be a paid profession. Let me explain about it. Mother is the most powerful goddess after the God who has born us. We are exist in this world due to her mother, a lot of sacrifices and pain. A mother keeps us her uterus by 9 months. When he has born us, at that time, she has borne a lot of pain. After that, he has so many sacrifices for our grown up. Even that mother who belonged to a poor family, she couldn't her household run through daily wages, the working member of their family. Sometimes she skip her diet of her children so that her children never slept hungry. And sometimes most of the mother goes for doing job for her children's education. She does job until her children don't like run their livelihood. During the childhood, our mother was learn her children's a word just like a mummy, repeated again and again. But when her children become adult, his mother asks one thing, they reply what her mother doesn't listen, and she asks again and again. Children become so angry. I tell you one time, why don't you listen to me? He becomes angry at her mother. That is the quality of the mother, that they didn't angry during their childhood, when she teaches her children over and over again. Finally, I would like to say that if you say yes, should being a mother be a paid profession, this is the honor killing of a mother in the world. Because when we talk about a mother, God also wore his head in front of mother. And no one can pay of her mother professions even after his death. That's all. Thank you so much. Any feedback from your side? वो visible था because this week was too many mistakes for them. Yes, the meaning that he was trying to convey was good, but आप जिस तरह present करना चाहते हो ना, जो questions के answer आप
एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चन, आप एग्जाम्पल डालिए किस तरह के क्वेश्चन पेरेंट्स पूछते हैं, हाँ आता है या हाँ नहीं आता है, ठीक है। रैंडमली अगर आप पूछते हैं इसको, अगर एक जनरल फॉर्म में बता दें, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। आई नो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना, कि आपको करना क्या है कि आपने जनरल फॉर्म में किया कि मम्मी कुछ भी पूछती है तो आप मना कर देते हो या हाँ नहीं करते, तो जनरल फॉर्म में लोगे ना तो उनका ऑडियंस का दिमाग नहीं करता होगा, वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इससे बेटर है कोई 4 क्वेश्चन आप खुद दे लेते कि मम्मी ऐसा पूछती है तो मना कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप फिक्स रहते हैं एक पॉइंट पर, ठीक है, उनका भी दिमाग स्टेबलाइज। ऑल्सो पिछली बार से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, आई थिंक यू डिड योर वर्क्स, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो ग्रो किया ही है, उसके साथ साथ आपका प्रोनाउंसिएशन, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरा अच्छे से बोलें, ठीक है। वर्ड पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रहे हैं, अच्छे से सुनाई दे रहा है। ग्रामेटिकल एरर का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आप देखते देखते प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। आपका जो प्रॉब्लम है, जो स्पोकिंग में प्रॉब्लम है, दैट इज ओनली योर मॉड्यूलेशन। तो अगर आपने अभी जैसे साफ बोलना शुरू कर दिया तो आप मॉड्यूलेशन तो कंटिन्यू करते रहना, तो आप कर रहे हो उसका प्रैक्टिस भी करना, उसके साथ साथ मॉड्यूलेशन के लिए कि जहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन में थोड़ा एक टोन डालिए, क्वेश्चनिंग टोन डालिए। जैसे इफ यू आस्क सम क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू दिस, ये एक क्वेश्चन, ठीक है, अब इसमें मेरा टोन वेराई किया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉरवर्ड विद फाइंडिंग दिस, मतलब एक सडन टोन से आप नीचे आते हैं, नीचे से फिर आप एक्सप्लेन करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब वॉइस में कहीं ना कहीं वेरिएशन आना चाहिए, चाहे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं चाहे आप आंसर बता रहे हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट, बाकी लोग नहीं लिखते हैं। यस, ये जो लास्ट वेंचर है ना, जो बैठ के सबके तालियां बजा रहे हैं, जब बाकी सब अपना प्रेजेंट कर देंगे उसके बाद यू कैन कम अप हियर एंड प्रेजेंट योर आइडियाज इन 1 मिनट। Good morning to all. My name is Roshan Kumar. Today I am going to speak on in being common is enough to possess community. Community is a important part of life which help us to help others, try to understand others and realize the problem which our life and try to help them. It means caring for others and helping needing people. It also means loving and caring plants and animals. Every religion in the world tells about humanity. Humanity is a vision we all are what we are today. People who work for humanity are the happiness on no matter which religion we belong to. We are humans first. We must help each other and strive for humanity. Helping the poor, disabled and old is one of the greatest things a person can do. We don't need to be a very rich to serve humanity. A small act of kindness, great help. We can give food to someone who is hungry. We give some of our clothes to someone who needed it. We can help a poor student in paying his fees or purchasing books. All such acts of humanity gives a lot of inner happiness. Thanks. Feedback from your side? Yes. Any other feedback from him? First of all, pronunciation problem है, कुछ words आप pronounce नहीं कर रहे हैं, आधा भी pronounce कर रहे हैं। देखिए आप पहले read करके आए, perfect person को आप reading that, second of all, you are reading the paper instead of telling people about this. वो रीड नहीं करना है, आपको बताना है। तो इसी के
कारण आपका वॉइस इशू हो रहा है, क्या कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। रुक जाओ, हाँ, ये ask question. Good afternoon, everyone. My name is Manish Kumar. Today's topic is profession of teacher. All of us go to a school to learn new things and develop good habits. All thought we learn these things at home. Too. So I can say my mother is my first teacher. Then when I visited my school, it was my primary school. Teachers always want their students to learn more and more. They like it when a student asks questions and wants to learn more. There are only two people in this world when feel happy in answering my childish questions. One is my mother and the other one is my school teacher. We learn different things from different palaces, and one of the most common palaces in our school. Teachers are not only those who them us at school. They can be anyone who teaches you. They can either give you cooking knowledge or some moral and social knowledge. Some life coaches and motivational speakers are also teachers. People who take you out from darkness are teachers. Conclusion. Respect your teachers because you are really lucky to have them. In a very famous to by Kabir Das ji, he explained that it was my teacher who told me about God. So when I meet both God and teacher at the same time, I will honor my first teacher. First of all, what about the content? Yes, simple and relatable. He does not, he did not use any of the big, like big words or any of the big quotations or any of the big stories. He has used a simple example and relatable. That is, he has used a story of his own, some of his own memories he has put on with. That was a good thing. Content बहुत अच्छा था. Minor mistakes or grammatical that can be scored, but बाकी आपका content अच्छा था. Now about the speaking, your voice is monotone. ठीक है, voice का आपका कोई भी tone ऊपर नीचे कहीं नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आप कोई आंसर बताते हैं, important point बताते हैं, तो voice Rest आपका pronunciation थोड़ा सा problem है, एक तो words को जब words का yes, अपना discussion बाद में करिएगा. आप सब थोड़ा सा emotion के साथ बोलना है और थोड़ा सा confidence के साथ. Yes, next. Humans, the most advanced and talented creature living on Earth. We humans are heading towards a whole new world of technology, but somehow, somewhere, we are losing our discipline
and many attributes of being a good human. Good evening, respected teachers and my dear friends. I am Vishal Kumar, a BBA student from Bridge1. If being a human is humanity, I don't think. If being a human is humanity, then where are these terrorists, these attacks are going on Earth? If being a human is humanity, then who is doing all those crimes, killing other people, having people for a few amount of money? Those terrorists who are killing people, doing bomb blasts in different parts of the world. Do you really think they are human? No, they are not human. They are even worse than animals, but roaming around in the world in form of a human. We no need to fear of these kinds of animals because there are many people in the world who are having humanity. They understand the value of each other. They understand the value of discipline. They understand the value of human life. There are some people who are foundation of humanity and working a lot to improve it. We students are the future of our country, our parents, and our world. We have to take chance to improve the future, and we will improve it. It will take some time, but we will establish humanity. Maybe not immediately, but absolutely and definitely. Thank you. Yes. What is your feedback? How about the content? पहले content बताइए. No? Okay. Content was good. Voice was great. It was at least audible to each and every person. But voice modulation, ठीक है? मोनोटोन में आप बोल रहे हैं, ठीक है? उससे पहले आप कीजिए. यहाँ नहीं. I have to write. आपका यहाँ पर टोन जो है yes, next. Yes, no discussion. Hi everyone. Good afternoon, one and all who is present here. I am Avinash. I am standing in front of you to deliver a very short speech on the topic: Is being a woman is enough to possess humanity? I think the answer is no. Then what is humanity? Then what is humanity? The humanity is not but to serve the mankind is humanity. When you help the poor or needy people, that is humanity. When you give food to the beggar, that is humanity. At last, I want to conclude my speech by saying that when you help someone without knowing them, that is humanity. Thank you. Yes, what is your feedback on the speech? Very short. Very short, and in the pocket, and this Yes, first of all, पहले तो अपना डिस्कशन बंद करो, ठीक है? जो आते हैं उसके लिए बस ताली बजा देते हो, पहले सुना भी करो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर. Yes, first of all, too much movement, ठीक है? Movement restrict करिए. Second of all, प्रॉब्लम आपकी स्पीच में नहीं है, ठीक है? कंटेंट शॉर्ट है लेकिन प्रिसाइज, बट
the voice variation should be present. ठीक है, ज़्यादा gap हो रहा है, gap को कम करिए. Also, if you are repeating a point, जो repetition आप कर रहे हैं किसी भी point का, उस दौरान आपका voice में भी changes आना चाहिए. Start from a lower bass voice and again repeating higher the bass of your voice. ठीक है, वॉइस आपका हमेशा स्टार्टिंग में लोअर रहना चाहिए. अगर आप कोई रिपीट कर रहे हैं स्टेटमेंट या वर्ड कोई रिपीट कर रहे हैं, पहला सेंटेंस या पहली बार बोला गया वर्ड हमेशा लोअर बेस पे रहना चाहिए. इसके बाद पिच हाई कर देगा. ठीक है, समटाइम्स आई हैव सीन पीपल हु आर रिपीटिंग स्टेटमेंट्स 5 टाइम्स एंड 5 टोन आगे बढ़ना. आप सोच सकते हैं कितनी ऊंची आवाज गई होगी, उसका 5 टोन ऊपर बढ़ते जा रहा है उसका वॉइस. So you have to do that because it will make it clear that this should be the major important point that you should remember. ठीक है, एक बच्चे ने ये मुलीबा जी का एग्जांपल दिया था in the speech, right? Have you heard his her talks? आपने सुना है? उसमें अगर आपको remember होगा, she repeated a point and she made it clear that she was repeating this point and her voice got higher than the one prior from this, right or not? ये चीज नोट किया करो ना, तुम लोग कंटेंट में ही लग जाते हो खाली कंटेंट दिखाई. जो नोटेशंस आप देते हैं, जो इम्पोर्टेंस आप दिखाना चाहते हैं, वो आपकी वॉइस वेरिएशन से ही पता चलेगा. क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन उतना ज्यादा आप नहीं दिखा सकते हो. यू कैन नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस इफ यू आर फीलिंग सैड. ठीक है, यू कैन नॉट लाफ आउट लाउड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी. ये चीज इमोशन आपकी वॉइस वेरिएशन से पता चलती है, हाउ मच एक्सट्रीमली यू आर फीलिंग द इमोशन. इसी वजह से वॉइस मॉड्यूलेशन करना जरूरी होता है. ठीक है, थोड़ा सा वर्क करोगे धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन ध्यान देना है जब भी प्रैक्टिस करो इस चीज पे ध्यान दो कि तुम्हारा वॉइस मॉड्यूलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है, ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? ठीक है बच्चे, Good afternoon, friends. My name is Aryabhata University. My yes, be quiet and hear it. Good afternoon, friends. First of all, I would like to thank ma'am for giving me this golden opportunity. My name is Aryabhata University, and my speaker should being a mother be a pet profession. In my opinion, being a mother should not be a pet profession because God gifted mother to every child. Mother takes care of every child just like God. Without mother, there will be no God to life. We know that the first sound that comes out when the baby starts to speak, and the sound is mom, which is a word that takes care of every child of all. First pro is her mom after coming into the world. Why is the most natural word in this world? It is named Lord Jesus Christ. Mother is not only the word, but the basis of our lives. Why is the first word for all of us, which you remember in every story and film first. The name of God also forgetting the person, but never forgetting the name of the mother. Father and mother in this world are thus form of gods who see us with no selfishness, teach us, send to school, college, and always pray to God that our children will not get any difficulty and see he gets every success in their life. In the crisis, even the mother may sleep hungry at night, but she will never let her children go hungry to sleep. Mother loves all her children, even if she wants herself old clothes, but she buys new clothes for her children, sleeping in her bed place. And that is facilitates sleeping of her children in a comfortable place. She always teaches, explains us discipline, behavior, well and responsibility and role for the family, society, and the country. Do you know who is mom? The girls of today, the mother of future. But in today's days, girls are killed in mother's home.
You want to ask just people, where will your mother like your mother come from? I salute Mr. Narendra Modi ji, who has started the commission of Beti Bachao and Beti Padhao to save down. So everyone need to understand the importance of mother, because no one can live real life. And my last place, चाइनीज से इटालियन तक चटकार लगा के खाते हैं। शादियों में 100 से 150 तक स्टॉल लगवाते हैं। स्टॉल का मतलब होता है कि जैसे चाइनीज से इटालियन तक चटकार लगा के खाते हो। शादियों में 100 से 150 तक स्टॉल लगवाते हो। खाओ यार, खूब खाओ, पैसा है तो खाओ, जहाँ जाना चाहते हो जाओ। पटना का लिट्टी चोखा खाओ, बंगाल का मिठाई खाओ, हैदराबाद बिरयानी खाओ, जितना खाना चाहते हो खाओ, जहाँ जाना चाहते हो जाओ। लेकिन और कितना खाओगे, कहाँ जाओगे? और ये सब खाने के बाद दवा है मेरा प्यारा, माँ के हाथ से बनी रोटी का स्वाद था। Feedback from your side? Content is very good. Yeah, only on the basis of the lifespan you cannot judge the content. Yes. But body language. You cannot judge the ending for the whole speech. Okay. Yes. First of all, आपने yes, be quiet. Am I audible to you? नहीं, तो चुप रहिए. Be quiet. आपका जो इनिशियल स्टेज था, उस इनिशियल स्टेज को भी उतना ही एनर्जी के साथ प्रेजेंट करना है जो आपने एंडिंग में दिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपका जो कंटेंट था रिगार्डिंग द एंडिंग, उसको अगर छोड़ दें, कंटेंट जो था वो बहुत ही सिंपल था, बट इट वाज रिपीटेड. We have already made that point. Someone else has already made that point. So it is kind of a repetition that we felt when we were listening to you. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये पॉइंट्स जो आपने देखे कि रिपीट हो रहे हैं, या तो आप उन पर्सन का नाम लेके बोलिए कि मेरे फ्रेंड ने या उस पर्सन ने ये पॉइंट्स कही, ये मैं बताना चाहता हूँ, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई वांट टू रिपीट. अगर नहीं तो आप उसे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, उसे अपने स्पीच से हटा दीजिए. सेकेंड थिंग, आपका वॉइस आपको पता है कितना जोर है. जब उतनी जोर से बोल सकते हो तो स्पीच क्यों नहीं बोलते उतना जोर से? बच्चे खुद का जो अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वो तुम्हारे ही हाथ में, ठीक है. यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, दैट्स ऑल. हिंदी में आपने कभी कोई क्लासेस तो नहीं की है ना सीखने के लिए, हिंदी बचपन से बोलते आ रहे हो, इसीलिए उसमें तेज आवाज से निकलती है. जब आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है इंग्लिश में, आपने उतनी बात नहीं की है इंग्लिश में, इसी वजह से आपकी वॉइस धीरे हो जाती है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड हिम आल्सो, इसकी वॉइस ऊंची जा सकती है, मुझे पता है, लेकिन वो जाती नहीं है बिकॉज ओनली ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. आपका लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर बन जाता है कि वो कम्युनिकेशन नहीं करने देता है आपको. वो बैरियर नहीं बनना चाहिए, ठीक है. जिस तरह से हिंदी में बोलते हो उसी तरह इंग्लिश में बोलते, ठीक है. वही चीज मैं आपको बार बार बता दूँ. आप कितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, आप सबके श्लोक या सबके पोएम्स लिखते हैं, उनका वॉइस वेरिएशन पता चलता है कि नहीं, वॉइस तेज है ये पता चलता है कि नहीं, तो वो स्पीच में क्यों नहीं आता है? ऐसा तो नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है कि जो पैदा ही हुआ है रक्षा के वॉइस के साथ, वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे भी पता है. तो जो इमोशन ऑलरेडी आप दूसरे हिंदी लैंग्वेज में दिखा सकते हो, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? You just need to be more practicing the thing that you are going to say and attach those lines to your own feeling. How do you feel about that particular line? How do you feel about that particular point? ठीक है, वो डालना जरूरी है. अगर आप नहीं उसके बारे में सोचेंगे, सिर्फ एक पॉइंट बोलने के लिए आप वहाँ पर सिर्फ लेके आ गए, लिख कर आ गए, बोलेंगे तो उसमें इमोशन नहीं आए, ठीक है. उसको लिखिए तो उसमें इमोशन जोड़िए, क्या बात आप कर रहे हैं. इसीलिए मैंने ये सारे टॉपिक्स इसीलिए दिए हैं. These are all very connected to your very base, ठीक है. आप अगर जितना भी चाहें डिटैच करना, आप कम से कम कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसा लाएंगे जहाँ पर
इमोशन अटैच होंगे, तो उस चीज को बाहर निखार के लाना है हर एक पॉइंट। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? इसका टाइम हो गया भाई। कंप्लीट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ोगे तो मैं कुछ नहीं पढ़ती तुम्हारे साथ। ऑलराइट, लेट्स एंड दिस सेशन हियर। आल्सो जो स्टूडेंट्स नहीं लिख के लेके आए हैं वो नेक्स्ट क्लास एटलीस्ट स्पीच लिख के लेके आना। अगर आपको ग्रामेटिकल एरर प्रॉब्लम है तो इसी तरह प्रेजेंट करने से पहले मुझे दे देना, ठीक है?